So good morning to all. We have yesterday we were seeing this, but again I would like to repeat it. So we was discussing about the factors affecting on the enzyme action. We have seen this type of inhibition also, reversible type of inhibition and irreversible type of inhibition. There are two type of enzyme inhibition. First one is a reversible type. In the reversible type, the inhibitor will bind to the enzyme by non-covalent bond. And in the irreversible type of inhibition, inhibitor will bind to a enzyme by covalent bond. Now in the reversible inhibition, there are two types. First one is known as a competitive inhibition. In this case, a inhibitor and substrate, they will have structural resemblance or structural similarity, and that's why the inhibitor can be called as a substrate analog. Okay? And in this type of inhibition, Km value is increased. In this type of inhibition, Km value is increased and maximum velocity, that is a Vmax, is unchanged. Remember this line because there was a question on this line. So in competitive inhibition, Km value increases, whereas in Vmax remains constant or unchanged. Okay? Right? Example of competitive inhibition: enzyme succinate dehydrogenase. Enzyme succinate dehydrogenase is the example of competitive inhibition. Classical example: this enzyme convert succinic acid. So this enzyme convert malonic. Okay, this succinate dehydrogenase enzyme converts succinic acid, okay, into oxalic acid. सक्सिनिक एसिड को ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होता है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज is inhibited competitively. It is competitively inhibited by this substrate like malonic acid, then glutaric acid and oxalic acid itself. Okay, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम जो होता है उसके लिए सबस्ट्रेट कौन सा है? सक्सिनिक एसिड. उसका काम क्या है? सक्सिनिक एसिड का कन्वर्जन करना ऑक्सैलिक एसिड में. That is the role of this succinate dehydrogenase. This is a product. Okay, the product itself is a competitive inhibitor for this enzyme as well as other substrate like glutaric acid and malonic acid. So they are also competitive inhibitor of this. Another example is nothing but the ethanol. Ethanol is used in case of methanol poisoning because ethanol can compete with the methanol for alcohol dehydrogenase. That is the example of again कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन. तो आपको यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्लियर होना चाहिए, राइट. और नेक्स्ट टाइप का इनहिबिशन होता है आपका नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन. इन द रिवर्सिबल टाइप ओनली देयर आर टू टाइप ऑफ इनहिबिशन, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव. So non-competitive inhibition in this the inhibitor and substrate will not have a structural similarity. Non-competitive inhibition में क्या है कि substrate जो होता है और inhibitor जो होता है उसमें कोई structural similarity नहीं है. Again this inhibitor will bind to an enzyme at another site than active site and it will inhibit the enzyme. Okay. The inhibitor binds to the site other than the active site on the enzyme, and this binding interfere with the enzyme function or inhibit the enzyme function. Now inhibitor does not have any structural similarity with the substrate. In this case it is not a substrate analog, है ना. जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या था कि इनहिबिटर वाज अ सबस्ट्रेट एनालॉग, मतलब सबस्ट्रेट के जैसे उसका स्ट्रक्चर था. दैट्स व्हाई उनके बीच में कंपटीशन हो रहा था, है ना, मैं जाऊंगा. बट इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देयर इज नो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बिटवीन एंजाइम एंड योर inhibitor. So that's why inhibitor will bind to another site on an enzyme. Inhibitor will bind to another site known as a site other than the active site. Okay, but in this case inhibitor has a strong affinity towards the second site on the enzyme. Now what happens? Obviously inhibitor है तो reaction velocity क्या करेगा? So obviously it will decrease the reaction velocity. So in this type of inhibition Km value remains unchanged. We have to remember, in this type of inhibition Km value remains unchanged and Vmax, that is maximum velocity, is decreased or lowered. For example, heavy metals, जो heavy metals होते like silver, lead, mercury, they can bind non-competitively at the enzyme. And by this binding,
with the cysteine and sulfidyl groups present on the enzyme. तो जो metals होते हैं, metals they are the non-competitive inhibitor of enzymes. Now what they do, they binds to the particular amino acid residue. So they binds to the cysteine and sulfidyl groups present on the amino acid. These cysteine and sulfidyl groups of the amino acid residue on the enzyme, and they inhibit enzyme non-competitively. So I hope you understand non-competitive inhibition. Second type is an irreversible type of inhibition. Now in this, inhibitor will bind covalently. Inhibitor will bind covalently with the enzyme. In this case, the inhibitor will bind covalently with the enzyme, right, and inactivate the enzyme. Inactivate them, which is a irreversible. Okay, so inhibitors usually they are the toxic substances that poisons the enzyme. Irreversible inhibitor, irreversible inhibitors, they are the toxic substances which will poison the enzyme. Okay, they will form a covalent bond with the enzyme and they will inhibit the enzyme, right? Am I audible to you? Am I audible to you? Example of this irreversible type of enzyme inhibition. Irreversible type of enzyme inhibition is nothing but the pyruvate acetate. The enzyme is a pyruvate acetate which is irreversible. Okay, pyruvate acetate is irreversible inhibitor of enzyme like papain. तो पैपिन नाम का जो एंजाइम होता है उसको इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है कौन? पायरुवेट एसिटेट. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसिटेट. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड okay, glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. It combines. Okay, glyceraldehyde 3 phosphate is a irreversible inhibitor of dehydrogenase by combining with the sulfhydryl of enzyme and inactivate the enzyme. So there is a kind of irreversible type of inhibition again. Another example, diisopropyl fluorophosphate, DEF. Diisopropyl fluorophosphate it is nothing but the organophosphate compound, and it is a neurogas which was developed by Hitler. Diisopropyl fluorophosphate, it is a neurogas developed by Germans, that is Hitler, during the Second World War, and this enzyme, okay, this is the inhibitor for the enzyme. Okay, this is the inhibitor for the enzyme known as acetylcholine esterase. So this neurogas diisopropyl fluorophosphate inhibits the acetylcholine esterase by binding to a serine residue. Serine residue of serine protease enzyme, and also it is an inhibitor of acetylcholine esterase, and because of that acetylcholine level will increase in the body, and that's why there is a choking, bradycardia, and etc. diarrhea. Now you should recall what is the antidote for organophosphate poisoning. So that is known as pralidoxime, and which is a cholinesterase reactivator. Now another example of this irreversible type of inhibition, cyanide ions. Cyanide poisoning में क्या होता है? Cyanide ions, they inhibit the cytochrome oxidase irreversibly. Another example, disulfiram. It is a drug used in the treatment of alcohol dependence. Alcohol addiction हो गया तो इसको यूज करते हैं disulfiram. What is disulfiram? It is a inhibitor of aldehyde dehydrogenase. So disulfiram जो होता है, it is known as anti-abrasive. So it is a irreversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase used in the treatment of alcohol addiction. Now in this case you can see the competitive inhibitor here. On y-axis there is the velocity of rate of reaction, and on the x-axis you have substrate concentration. Substrate saturation curve in presence of presence and absence of competitive inhibitor. This one is known as this one. Okay? This one is without inhibitor. This is the curve without inhibitor. Okay? This is the curve without inhibitor. In absence of competitive inhibitor. Now in presence of competitive inhibitor, so you can see over here second curve. This is the curve place of competitive inhibitor. Now what happens? What is the difference between this? In this competitive inhibition, the Km value remains constant. Okay, sorry, the Vmax remains constant. Vmax remains constant. For these both these curve, Vmax is a constant. यहाँ पे Vmax है, और इसका भी यहाँ पे Vmax remains constant, but Km value is increased. Km value is increased. That's a new Km value. Now in case of non-competitive inhibition, same thing. Okay, substrate concentration versus velocity. Now this is a graph for without inhibitor. This is with the non-competitive inhibitor. Now non-competitive inhibitor, in this case
Km value will remain constant. Km value will remain constant. Km value दोनों का क्या है सेम है, but Vmax देखो यहाँ पे Vmax क्या है, it is lowered. There is a decrease in the Vmax, but Km value will remain same. Okay. So in case of competitive inhibition, तो Km value is increased. क्या है Km value क्या होता है, increase होता है देखो. In case of competitive inhibition, Km value is increased, but Vmax remains constant. In case of non-competitive inhibition, Vmax, okay, Vmax remains constant. Okay, Vmax remains constant. But क्या हो रहा है यहाँ पे Km, okay, sorry, Km value remains constant in case of non-competitive. Competitive inhibition में क्या है कि Vmax remains constant, Km value is increased. Okay, Km value increase होता है, Vmax constant होता है. तो in case of non-competitive inhibition, here Km value remains constant and Vmax is lowered or decreased. Vmax decrease होगा, but Km value cost होगा. I hope you are getting. Are you getting or not? So I am repeating it. Already ये हो चुका है, but yesterday there was some disturbances, so that's why. Are you getting or not? Suicide inhibition. Suicide inhibition means it is a kind of specialized inhibition. एक अलग तरह का inhibition होता है. In this, the inhibitor जो होता है inhibitor, so inhibitor is converted into a more potent metabolite by the same enzyme, and it inhibits the enzyme morely. That is known as suicide inhibition. So specialized type of irreversible inhibition. In this case, original inhibitor is converted into a more potent compound, potent form by the same enzyme thought to be inhibited. Example क्या होता है उसका? Example is allopurinol. Allopurinol is a drug used in the treatment of gout, which inhibits the xanthine oxidase enzyme. Which inhibits the xanthine oxidase enzyme to prevent the formation of uric acid. Right. So allopurinol is a suicide inhibitor of xanthine oxidase. Allopurinol is converted into one more toxic or one more potent inhibitor known as alloxanthine. तो allopurinol xanthine oxidase के साथ में combine होके इसका एक मेटाबॉलाइट बनता है, उसको बोलते हैं alloxanthine, which is a more effective as a inhibitor. In the similar manner, एक और example, 5-fluorouracil get converted into fluorodeoxyuridylate, which inhibit the enzyme thymidylate synthase. It is an anti-cancer drug, 5-fluorouracil. So again, it is an example of suicidal inhibition. Now next होता है allosteric inhibition. So allosteric inhibition means it is your body's mechanism to regulate the enzyme activity. आपके बॉडी का एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेट करने के लिए ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर होता है. एलोस्टेरिक एक्टिवेटर भी होता है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर होता है, उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन ऑफ एंजाइम और रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. सो कौन सा एंजाइम ज्यादा रहेगा, कौन सा एंजाइम कम रहेगा बॉडी में, ये रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन. सो एलोस्टेरिक इनहिबिशन is nothing but a type in the allosteric modulation of enzyme. So here the inhibitor और activator दो रहता है, तो allosteric inhibition भी होता है, allosteric activation भी होता है. Allosteric inhibition and allosteric activation. Activator or inhibitor, they binds to a site other than the active site, which is known as the allosteric site, and then there will be either increase in the enzyme catalyzed reaction or decrease in the enzyme catalyzed reaction, known as allosteric inhibition. So allosteric effector or modulator, they will modify the enzyme action by binding to the allosteric site, and regulate the enzyme. Yesterday we have started from this time. So enzyme specificity means enzyme are very specific in their nature. A particular enzyme ही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. एंजाइम इज अ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही एंजाइम उसको ही बाइंड करेगा. मतलब ग्लूकोज नाम का एंजाइम सिर्फ ग्लूकोज को ही कन्वर्ट करेगा, है ना. पर्टिकुलर L amino acid oxidase. So L amino acid oxidase is the enzyme which will oxidize only L amino acid, not D amino acid. So enzymes, they are having substrate specificity. Enzymes, they are having stereo specificity. Enzymes, they are having optical specificity. Okay. Enzymes, they are having reaction specificity. मतलब अगर L amino oxidase है, oxidase नाम का एंजाइम L amino oxidase, तो ऑक्सीडेज है तो उसका काम है कि ऑक्सीडेशन करना, वो डीएमाइनेशन नहीं करेगा, वो ट्रांसअमाइनेशन नहीं करेगा. सो व्हाट इज द रोल
वो ऑक्सीडाइज है तो वो ऑक्सीडेशन करेगा. सो रिएक्शन स्पेसिफिसिटी. सो एंजाइम्स दे हैव स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, reaction specificity. Enzymes specificity is depends on the only apoenzyme part of your coenzyme. Enzyme specificity depends on the apoenzyme part. Apoenzyme part. So you know that enzyme known as a active enzyme is known as a holo enzyme. Okay, holo enzyme which is a composed of a apoenzyme plus coenzyme. Apoenzyme plus coenzyme. So active enzyme is known as a holoenzyme. We are already seen. Now it is composed of a apoenzyme which is known as a protein part. It is a protein part, and coenzyme. Coenzyme is a non-protein part. It is non-protein part. Non-protein part. Now coenzyme, when it is bound to a enzyme tightly, known as a prosthetic group. नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम को टाइटली बाउंड किया है तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. सो अपो एंजाइम इज प्रोटीन पार्ट. सो एंजाइम स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स ऑन द अपो एंजाइम, दैट इज अ प्रोटीन पार्ट. और उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है. रिमेंबर एंजाइम स्पेसिफिसिटी मोस्टली डिपेंड्स ऑन द अपो एंजाइम, दैट इज अ प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, नॉट ऑन अ कोएंजाइम. Now theory is related to enzyme action. So how enzyme and substrate they will interact? What are the molecular level changes that occurs when there is interaction between enzyme and substrate? So that was proposed by different scientists. So there are three theories for the enzyme action. So first theory is nothing but the lock and key model, or it is also known as a Fisher theory. Lock and key model or Fisher theory. I will explain that theory in a moment. Then second theory होता है Coastlands model और induced fit theory, and third theory होता है substrate strain theory. So there are three theories that explain the enzyme action. Okay, so I will explain this theory in a moment. Now enzyme activity is measured in the unit. Enzyme activity is measured in the unit known as a catal. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. One catal is equal to how many? So enzyme activity is measured in the catal unit. One catal, what it indicates? One catal notes, one catal calculate, or one catal measures the conversion of 1 mole of substrate per second. One catal means क्या? It is a measure of conversion of 1 mole substrate per second. Mole per second. So there is also international limit. 1 catal is equal to 6 into 10 raised to 6. 1 catal is equal to 6 into 10 raised to 6. इसके ऊपर GPAT में क्वेश्चन आ चुका है. So enzyme activity is measured in the catal. So enzymes have different application. इनका application बहुत सारा industrial application है, जैसे in the beer manufacturing or different in the bakery, etc. Therapeutic application. So in the treatment of diseases like streptokinase, urokinase, diagnostic application. Okay? So they are used in the ELISA example. Alkaline phosphatase. So we'll see it. Don't worry. Are you getting or not? समझ रहे आपको? Okay. Now here the theories of enzyme action. Theories of enzyme action. Depending. Okay. First theory is nothing but it is known as a lock and key model. First theory is nothing but the lock and key model or Fisher theory. Fisher theory or lock and key model. So according to this theory, ये theory क्या कहता है कि enzyme and substrate they are having structures which are complementary to each other, and they are having structures so that they can fit perfectly into each other. Exactly like your lock and key. जैसे आपके घर में आपने लॉक लगा के रखा है और उसका की आपके पास है. अगर मैं दूसरा की लेके जाऊंगा तो वो लॉक नहीं खोल सकता. ठीक है, तो मतलब क्या कि in this theory, according to this theory, enzymes will have a particular shape, enzymes will have a particular structure, enzyme will have a particular configuration at active site, which this shape, this configuration, or this shape, this configuration, or this that exactly matches to the substrate. So substrate and enzyme will have complementary shape with each other, so that substrate will fit exactly in an enzyme to form an enzyme substrate complex, and then there is formation of product. Okay, this is a lock and key model. Lock and key model or Fisher theory. Second theory is known as a Coastland theory of induced fit theory. Now, according to this theory,
Enzyme does not have a pre-shape. Enzyme को पहले ही कोई shape नहीं है. There is a changes in the enzyme when there is a substrate and enzyme interaction. The substrate will interact with the enzyme. The substrate will bring about the change. Substrate will bring about the change in the enzyme. है ना? So substrate क्या करेगा जब interact होगा तो substrate में उसमें substrate को fit होने के लिए उसमें change induce करेगा. There is a conformational change in the enzyme. When substrate will interact with the enzyme, there is a conformational change in the enzyme, and so that enzyme will get a shape which is complementary to the your substrate, and this is known as a induced fit theory क्योंकि substrate will induce the enzyme to fit in substrate. Exactly. Substrate induced theory or substrate induced theory or Coastlands model. Third theory is nothing but the substrate strain theory. Now in this case, substrate will interact with the enzyme, and it will bring about some changes in the conformation of enzyme. But here you will have strain on enzyme. Here you will have strain on enzyme. This is known as a substrate strain theory. Substrate strain theory. Here is a strain on the substrate. Substrate में थोड़ा सा strain आएगा. Okay, there are three theories: lock and key model, induced fit theory, and substrate strain theory. So I hope you have understood this theory. कभी-कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. Next part we'll see fast. Okay, so allosteric inhibitors, how they will act. So your enzyme has a active site. Active site is also known as a catalytic site. ये जो C लिखा है that is a active site or catalytic site. Okay, now this is known as another site which is a allosteric site. This is another site known as a allosteric site. Okay, now what happens, there are two type of there is regulation of enzyme in the body. So either there is a positive factor or there is a negative factor. So allosteric activators are there. Allosteric activator means they will increase the activity of this enzyme, and allosteric inhibitors are there, means they will decrease the activity of enzyme. When allosteric activator will combine with the allosteric site, जब allosteric activator combine होता है allosteric site में, so it will bring about the conformational changes at active site. It will bring about the conformational changes at active site. Active site को shape change करेगा ताकि substrate उसमें आ सके. So there is an interaction between substrate and active site at the. Okay, there is interaction between substrate and enzyme at the active site only. But first, allosteric activator should combine with the active site, and it will bring about the changes so that a substrate will fit to an enzyme, and then only. Okay, that's why when activator is fixed at a catalytic site, it assumes a correct three-dimensional structure so that the substrate now will bind to it. It is not. When activator will bind to a allosteric site, it will bring out the changes in the active site so that the substrate will fit to the active site. Now second is the enzyme inhibitor, allosteric inhibitor. तो ये क्या करता है? Allosteric inhibitor will bind to allosteric site first, and again it will prevent the active site to become feasible to bind with the substrate. मतलब क्या, ये inhibitor जब allosteric site को bind करेगा तो ये इसमें changes नहीं होने देगा. It will prevent the changes in the catalytic site and active site. So allosteric. Okay, so when inhibitor is attached to a allosteric site, the catalytic site does not assume a correct shape, so that substrate cannot fit correctly. Known as the allosteric regulators. So allosteric activators, allosteric inhibitors. That's how there is a regulation of enzyme in the body. So there is a regulation of enzyme in the body, enzyme action in the body. Next is nothing but this is example of lock and key model. As I told you, at a active site, your enzyme will have opposite shape as that of the substrate, and that's why particular substrate will only fit in the particular enzyme. Okay, and that's why they are having substrate specificity. So substrate specificity is explained by lock and key model. So yeah, you can see particular key will be open only particular lock. Okay, so enzyme and substrate are having specific to each other. This is a similar to lock and key model known as a Fisher theory. Second theory होता है Coastlands theory known as the induced fit theory. Coastlands theory or induced fit theory. In this case, substrate will interact with the enzyme, and substrate
substrate bring about changes in the enzyme, and there is a particular shape. Now substrate can fit in the enzyme. So substrate induces the some conformational changes in the enzyme. That's why coastlands induced a pit theory. So in the coastlands induced theory, substrate will interact with the enzyme and it will bring about the changes in the enzyme, because in the induced pit model there is no pre-formed shape of the enzyme. Right now, some we have already seen this, but some metals they activate the enzyme. Some enzymes require a metal as a cofactor ना. कुछ एंजाइम के लिए मेटल कोफैक्टर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स विल हैव मेटालिक cation as a cofactor. Metallic cation as a cofactor. Most of the enzymes will have metallic cations as a cofactor. For example, magnesium, है ना, manganese, zinc, calcium, copper, है ना, potassium. So most of the enzymes they require cations, metallic cations for their activation, or they are known as a cofactors. Okay. Now, but certain enzymes, for example, amylase. So amylase require anion. Amylase require anion. Now, ATPase require magnesium and calcium as activator. Enolase enzyme require magnesium as activator. Right. Now, in this case, metal activator जो होता है, they are not bound to a enzymes. These metal ions they are not tightly bound to enzymes. Okay, they are not tightly bound to enzyme. Another definition is there. Another enzyme is there known as a metallozyme. Now, in this case, enzymes and metals they are tightly bound. Enzymes and metals they are tightly bound. Means you can say in this case metal is a very integral part of your enzyme. मेटल एक्टिवेटर मतलब ये मेटल्स लगते हैं एक्टिवेशन करने के लिए एंजाइम का, वो दे आर नॉट अ टाइटली बॉन्ड, बट मेटल एंजाइम में वही मेटल एज अ पार्ट ऑफ एंजाइम ही होते हैं, दे आर टाइटली बॉन्ड. सो एग्जांपल of metallozyme, for example, alcohol dehydrogenase, then carbonic anhydrase, okay, then aldehyde dehydrogenase, and this one is alcohol dehydrogenase. Aldehyde dehydrogenase, carbonic anhydrase, alcohol dehydrogenase, acid phosphatase, alkaline phosphatase, aldolase, and carboxypeptidase. These enzymes they require metal and which are integral part of enzyme. That's why they are known as metallozyme. Now, copper is required for phenyl oxide. This example, copper is required for phenyl oxide. Manganese for pyruvate oxidase. Molybdenum for xanthine oxidase. And iron लगता है, copper लगता है किसके लिए? cytochrome oxidase के लिए. So they are the example of metal enzyme. Now, active site क्या होता है? Active site on the enzyme. So active site is nothing but the site at which there is a conversion of substrate into product. Active site क्या होता है? Active site on the enzyme. So active site is the site where there is actually catalysis takes place. Actual catalysis takes place at the active site, right? And that's why active site is sometimes called as a catalytic site. Active site is also known as a catalytic site, or also known as a pockets, or also known as a crypt or crevices. Okay. Now enzyme is nothing but the protein in structure. Enzyme क्या होता है? Protein होता है. कौन सा protein है भाई? Tertiary structure. Okay? Enzyme is having tertiary structure, right? Tertiary structure. Because of the tertiary structure of the protein, which results from the three-dimensional structure and conformation, we have seen the protein, right? So enzyme is nothing but the protein having tertiary structure. So, and as there is a three-dimensional structural conformation, so there is a existence of active site. जो enzyme होता है, it is a big in size. Okay? Enzyme क्या होता है? बड़ा होता है. जैसे मान लीजिए substrate क्या होता है? Substrate छोटा होता है. Substrate is small. On this enzyme there is a particular amino acid residue. कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे particular amino acid residue रहेगा. So at this site only this substrate will combine. There is a conversion of substrate into product. Now this site is known as the active site. This site is known as the active site. Okay? And there is a presence of active site on the enzyme because enzyme is a protein in structure and there is also having tertiary structure. Active site is made from amino acids. Active site is made from amino acid residue. It is also known as a catalytic site or catalytic residue. Now which are placed at a distance. Okay. Example उसका एक lysozyme है. Lysozyme नाम का enzyme है. और lysozyme has a 129 amino acid. इसके 129 amino acid होते हैं lysozyme. Lysozyme has a 129 amino acid. Now this lysozyme is present. ये कहाँ पे टर्म आता है आपको? Lysozyme is present in the granules of neutrophils. जो आपके
WBC होते हैं neutrophils. So lysozyme is present in the granules of neutrophils, and neutrophils they are having phagocytic function, right? And this lysozyme is present in the granules of neutrophil. तो neutrophil जब infection site के पास जाएगा तो infection को निगल लेगा, खा लेगा, और बाद में क्या है, lysozyme रिलीज करेगा. lysozyme में क्या होता है, lysozyme में क्या होता है, proteolytic enzyme, and they will digest the bacteria. That's why neutrophils are having phagocytic nature. Now this lysozyme is 129 amino acid, but at the active site only amino acid known as a 35 number amino acid, 52, 62, 63 and 101, है ना. तो 60 है ना. तो at the active site only 5 amino acids are present. कौन से, तो 35 नंबर का होता है, 52 नंबर का होता है, 62 नंबर का होता है, 63 नंबर का होता है एंड 101 नंबर का होता है. मतलब कहने का मतलब है कि एंजाइम जो होता है वो बिग इन साइज होता है, एंड देयर इज ओनली पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट. ओके, एंड मोस्टली वो अमीनो एसिड कौन से होते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन होता है, तो अपन देखेंगे. नाउ एक्टिव साइट इज आल्सो नोन एज अ क्लिफ्ट और क्रीविसेस और पॉकेट्स, नाउ ऑक्युपाइंग द स्मॉल रीजन ऑफ लार्ज एंजाइम. And active site is not a rigid. Active site is not a rigid. It is a flexible. That's why Indus-Speed theory. Indus-Speed theory. उसकी वजह से. Are you getting or not? Active site की features important है. Active site is not a rigid. It's a flexible. Are you getting or not? Am I audible to you? Active site has a two sides. Active site में भी दो side होता है. First is known as a active site में भी दो side होता है. First is known as a substrate binding site. जहाँ पे substrate bind होगा उसको बोलेंगे अपन substrate binding site. So on the active site of enzyme, you have two sites, substrate binding site, and there is another site known as a catalytic site. Coenzymes and cofactors also bind and also present as a part of active site. जो coenzymes होते हैं, cofactors होते हैं, वो भी active site के ही part of. Now substrate binds to the active site by a weak non-covalent bond. तो सबस्ट्रेट जो है ना वो एक्टिव साइट को कैसे बाइंड करता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से, है ना. And they are very specific in their action and function due to existence of active site. So enzymes they are very specific in their action due to existence of active site only. Now most commonly found amino acid at the active site कौन सा होता है, serine. Serine is the most commonly found amino acid at the active site, but also serine के साथ में ये भी पाया जाता है cysteine, lysine, arginine, glutamate, tyrosine. Cysteine, okay, serine, cysteine, lysine, arginine, glutamate, tyrosine, these are the most commonly found amino acid at the active site. That's why most of the inhibitors जो होते हैं ना, they binds with the serine residue or they binds with the sulfhydryl group of cysteine, है ना, और guanidino group of arginine और carboxy group of glutamate, है ना, tyrosine का hydroxyl group. तो इस तरीके से होता है एंजाइम में ये एक्टिव साइट के ऊपर ये अमीनो एसिड पाए जाते हैं. कौन से, सेरीन, सिस्टीन, लाइसिन, अर्जिनिन, ग्लूटामेट एंड टायरोसिन. दे आर कॉमनली फाउंड एट द एक्टिव साइट, राइट. We see the next part. Now again you see difference between competitive inhibition and non-competitive inhibition. So it is type of reversible type of inhibition. So जो दोनों भी है competitive and non-competitive, they are the type of reversible inhibitor. Okay. Now first we'll see competitive inhibition. So in this case competitive inhibition is reversible, and in this case substrate and your inhibitor will have structure which is resembling to each other. यहाँ पे उनके structural similarity होगा. Now inhibitor binds at the active site. In case of competitive inhibitor, जो inhibitor active site के ऊपर bind होता है. Now this is very important. So in this competitive type of inhibition, Km value is increased and Vmax will be constant. Vmax will be constant, Km value will be increased. Now inhibitor cannot bind with the ES complex. इसमें जो inhibitor होता है वो active site के ऊपर ही bind होता है and enzyme substrate complex में नहीं bind. Now inhibitor will decrease the substrate affinity. Inhibitor will decrease the substrate affinity. यहाँ पे कौन सा complex बनता है, enzyme inhibitor complex बनता है. Then Michaelis-Menten equation में changes करके वो है ना, what is the normal Michaelis-Menten equation? V is equal to Vmax S divided by, है ना, Vmax S divided by Km plus S. Km plus S होगा, है ना. V is equal to Vmax S divided by Km plus S. ऐसा normal equation होता है, but in competitive inhibition the equation changes like V is equal to Vmax plus S divided by 1 plus I Km into 1 plus I
divided by K1 to S. Then line Weber double reciprocal plot will also change. And there is one more plot known as AD's ऑब्स्टी प्लॉट एडी ऑब्स्टी प्लॉट इसके बारे में छोड़ दो आप इसके बारे में मत सोचो ये बहुत ही एडवांस लेवल का है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है ये आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा अनदर होता है सेकंड टाइप ऑफ इनहिबिशन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये पूरा एमपीएस लेवल का पढ़ा रहा हूं मैं रिवर्सिबल और ये आप पूछो कि उनको पूछो किसी को भी पूछो मालूम ही नहीं किसी को कैसे चेंज होता है इक्वेशन वगैरह आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में यहाँ तक की पॉइंट्स दिए most of the books they are given only 4 or 5 points in case of comparison बाकी के points of additionally now non-competitive inhibition which is either reversible or irreversible now inhibitor and substrate will not have a structural similarity inhibitor does not bind to active site inhibitor will bind to another site now Vmax is decreased over here and Km value will remain same Km value remains same Vmax is lowered in this case Km value was increased Vmax was same inhibitor can bind inhibitor in case of non-competitive inhibition inhibitor can bind with the ES complex ES मतलब enzyme substrate complex and does not change the substrate affinity for the enzyme complex is a complex का बनता है यहाँ पे complex is nothing but the enzyme substrate inhibitor complex और enzyme inhibitor complex Magli's maintain भी equation भी change होगा accordingly line wear पर double reciprocal plot का equation भी change होगा accordingly and AD's obstetric plot भी change होगा accordingly still it is not required for your ideal level but next देखो enzymes and their application तो मैंने पहले बोला ये हो चुका है last time but due to disturbances I am taking again so enzymes and their application so enzymes का application बहुत सारा होता है industrial application होता है ना estimation के लिए use होते हैं therapeutic use होता है so पहला देखो पहला क्या है first use of enzymes that is a clinical application or therapeutic application clinical application therapeutic में क्या है उसका use कर रहे हैं अपन किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए so कौन है streptokinase urokinase ये ऑलरेडी अपन ने देखा है streptokinase urokinase they are the plasminogen activator tissue plasminogen activator they are used in the they are used to dissolve the clots blood clots so they are used to dissolve the blood clots in the myocardial infarction or in the angina or in the coronary clots एस्परजिनेज नाम का एंजाइम होता है दैट इज मोस्टली यूज्ड इन द कैंसर तो ये अभी इसका सैचेट वगैरह मिलता है जिसको भी कोई कैंसर का दिक्कत है उसमें एस्परजिनेज यूज करते हैं पेपिन इज द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड एज एंटी इंफ्लेमेटरी अल्फा एंटीडिप्सिन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा पैंक्रियाटिक एंजाइम जो होता है लाइपेज डिप्सिन दे आर यूज्ड फॉर द डाइजेस्टिव पर्पस देयर इज वन कैप्सूल नोन एज यूनिजाइम नाम का कैप्सूल आता है उसमें सब क्या रहता है ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन लाइपेज नामाइलेज वगैरह ये कैप्सूल में सभी डाइजेस्टिव एंजाइम का कॉम्बिनेशन है जिनको डाइजेशन का इशू है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना तो उनको ये यूनिजाइम कैप्सूल प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर नाउ नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ एंजाइम्स एज अ लेबोरेटरी एस्टिमेशन में कौन से एंजाइम यूज होंगे फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड ग्लूकोज peroxide they are used urease enzyme is used in the estimation of urea cholesterol oxidase used in the estimation of cholesterol uric acid के लिए uricase enzyme यूज होता है triglycerides estimation के लिए lipase enzyme है luciferase is used to estimate the contamination of bacterial food contamination of bacteria in the food luciferase alkaline phosphatase it is an analytical tool for ELISA ठीक है ये ऑलरेडी कल भी देखा था हमने बट स्टिल मैं रिपीट कर रहा हूँ now this is very important again significance of serum concentration of various diagnostic enzyme इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुके हैं in a particular disease particular type of enzyme will be increased अगर कोई डिसीज हो रहा है आपको से लिवर सर्स हो गया तो एक एंजाइम इंक्रीज होगा है ना जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था कुछ एंजाइम्स जो है वो इंक्रीज होते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट ऑफ एंजाइम्स so enzymes they are increased in case of particular disease so what are the enzymes which are increased in case of myocardial infarction so myocardial infarction अगर हो गया आपको these enzymes they will be increased myoglobin cardiac troponin then lactate dehydrogenase and creatinine phosphokinase so these enzymes they are increased in case of myocardial infarction now out of that also some are the early markers some are the late markers for myocardial infarction तो early markers कौन है भाई late markers कौन है so myoglobin मायो मतलब क्या मसल
मसल एंड ग्लोबिन मतलब ग्लोबिन ना, मसल हार्ट में भी होता है इसलिए मायोग्लोबिन. सो इट इज अ मायोग्लोबिन इज अर्ली मार्कर बट इट इज नॉट अ कार्डियक स्पेसिफिक है ना. तो ये बाकी मसल डिसीज में भी इंक्रीज होगा, कार्डियक मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ही नहीं करो. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कार्डियक स्पेसिफिक. सेकंड, कार्डियक ट्रोपोनिन 1. कार्डियक ट्रोपोनिन 1, ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है और एक कार्डियक ट्रोपोनिन है. सो इट इज अ वेरी स्पेसिफिक, इट इज अ अर्ली मार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, early marker for myocardial infection, and it is a cardiac specific. And this was question in GPAT 2022. Option में यही था, which of the following enzyme level will be increased and it is a cardiac specific in case of myocardial infection. ऑप्शन में था मायोग्लोबिन, कार्डियक ट्रोपोनिन है ना, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ऐसा एंजाइम ऑप्शन में थे. ओके, सो कार्डियक ट्रोपोनिन 1 इट इज अर्ली मार्कर एंड कार्डियक स्पेसिफिक. कार्डियक ट्रोपोनिन 2 again it is also early marker but it is its level is increased in other condition also. Fourth होता है lactate dehydrogenase. So lactate dehydrogenase is a cardiac specific but late marker. lactate dehydrogenase जो होता है cardiac specific है लेकिन late marker है, so late होता है. उसका लेवल इंक्रीज कब होगा? 2-3 दिन के बाद होगा. बट यहाँ पे कार्डियक ट्रोपोनिन का लेवल इंक्रीज कब होगा? विद इन 1 डे ऑफ योर मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अगर आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया विद इन 1 डे इसका लेवल बढ़ जाएगा. बट इसका लेवल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का लेवल 3 दिन के बाद बढ़ेगा. सो दो इज कार्डियक स्पेसिफिक बट इट इज अ लेट मार्कर. और बहुत सारे बच्चों को दोनों ऑप्शन में ही कंफ्यूजन था. क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज अनदर एंजाइम, सो इट इज अ कार्डियक स्पेसिफिक एंड अगेन अर्ली मार्कर. अर्ली मार्कर कौन है? दो है. कौन है? कार्डियक ट्रोपोनिन 1 एंड क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज. याद रखना है. आर यू गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट होता है हेपेटिक डिसीज. लिवर डिसीज में कौन से एंजाइम इंक्रीज होंगे? तो लिवर डिसीज में होगा अलानाइन ट्रांसअमाइनेज. कब होगा? हेपेटाइटिस में, वायरल हेपेटाइटिस में. सो इफ देयर इज अ वायरल हेपेटाइटिस, सो अलानाइन ट्रांसअमाइनेज विल बी इंक्रीज्ड. नाउ एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज कब इंक्रीज होगा? सो इट इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ लिवर डिसीज एंड जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा? अलानाइन. ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज इंक्रीज होगा. gamma glutarate transpeptidase. So this is increased in case of alcoholic liver disease. Alcoholic liver disease. Iodase nucleotidase, that is increased in case of cholestatic hepatitis. Hepatic cholestasis. Hepatic cholestasis. That is increased in case of liver disease. Now you can see over here. So it is nothing but the plasma level of your enzyme, international unit per liter. So those are 300-400. Now it is a time, days after infection. मतलब एक दिन हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन. टाइम कोर्स ऑफ इलेवेशन ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंड क्रेटिनिन काइनेज इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन. जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट अटैक आ गया आपको, तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम इंक्रीज होगा? और ये है ना. तो देखो कंपैरिजन बिटवीन creatine kinase and lactate dehydrogenase. देखो जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एक पे अभी हो गया, तो एक दिन में ही आपका इसका लेवल बढ़ जाएगा, एक दिन में ही इसका लेवल बढ़ जाएगा. सो creatine kinase that is increased within a first day, one day, one day यहाँ पे one day आएगा, one day. So within a 1 day creatine kinase level will be increased, but lactate dehydrogenase will take at least 3-4 days to increase the level. है ना, इसके लिए 4 दिन लग जाएंगे. That's why creatine kinase is early marker than lactate dehydrogenase. Creatine kinase is early marker than lactate dehydrogenase in case of myocardial infarction. Now in case of muscle disease, which enzymes are increased? In case of muscle disease, what enzymes are increased? So creatine kinase, it is increased in case of muscular dystrophy. So muscular dystrophy क्या होता है? It is a genetic disorder. Genetic disorder, and because of this muscular dystrophy, thousands of patients they are on a wheelchair. Muscular dystrophy मतलब क्या? इसमें मसल जो है ना, मसल डिजेनरेट होता है. So there is a degeneration of muscle due to genetic defect. तो मसल स्ट्रेंथ नहीं होगा, उसमें वो कुछ ले नहीं सकता, ग्लास भी उठा नहीं सकता पानी का, उसमें ताकत ही नहीं रहता. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. देन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बिकॉज मायोकार्डियल में क्या है? मसल है. And aldolase or ALD is increasing case of, it is an early marker for muscles disease. Aspartate transaminase AST increasing the muscle disease. Okay.
बोन डिसीज में कौन इंक्रीज होता है भाई? बोन डिसीज में alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase is increased in case of bone disease. Now this enzyme is responsible for the calcification and mineralization of bones. This enzyme is responsible for the mineralization of bones. जैसे कैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिटोपिक हार्मोन, विटामिन डी, तो विटामिन डी और विटामिन डी कैल्सिफिकेशन करता है, लेकिन कब? तो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज विटामिन डी कैन कॉज कैल्सिफिकेशन. तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम होता है कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना, तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट ऐड होगा किसमें? बोन्स में. Now, this enzyme is increased in case of rickets and Paget disease. Now next होता है pancreatic disease. Pancreatic disease में amylase lipase ये दोनों enzyme increase होंगे. So amylase lipase level of your body will be increased in case of amylase will be increased in case of pancreatitis, and this is also increased in pancreatitis, acute pancreatitis. Prostate cancer में कौन increase होगा? Acid phosphatase is a marker enzyme for prostate cancer. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Then prostate specific antigen, it is increased in the case of prostate cancer. ये already अपने history देखा था. So again I have revised you. Now again this is selected enzymes, examples of enzyme and their respective substrate and competitive inhibitor. आपको मालूम होना चाहिए किसका कौन inhibitor है, कौन का किसका competitive inhibitor कौन है, right? Now enzyme is nothing but the xanthine oxidase. Xanthine oxidase enzyme होता है. इसका substrate कौन होता है? hypoxanthine और xanthine. Hypoxanthine or xanthine is a substrate, and xanthine oxidase uses this xanthine and convert it into uric acid. Hypoxanthine xanthine को uric acid में convert करता है xanthine oxidase. और इसका inhibitor कौन है? Allopurinol. So allopurinol is an inhibitor of this enzyme, and that's why allopurinol is used in the gout. Allopurinol is used in the gout to decrease the uric acid level. Gout में use किया था. So it is used. It is used in the control of gout to reduce the excess of production of uric acid from the hypoxanthine. Now next is monoamine oxidase. Monoamine oxidase. Monoamine oxidase का substrate क्या कौन होता है? So monoamine oxidase will metabolize catecholamines like epinephrine, है ना, मतलब noradrenaline, adrenaline, dopamine, है ना. तो monoamine oxidase will metabolize the catecholamines. So catecholamines are nothing but the substrate for monoamines. उसका है ना, उसका इनहिबिटर कौन है? एम्फेटामाइन, माओ इनहिबिटर. माओ इनहिबिटर बहुत है, से रोसाजिलिन, सिलेजिलिन वगैरह, इपेट्रिन, दे आर द माओ इनहिबिटर, यूजफुल इन द एलिवेटिंग द कैटेकोलामाइन लेवल्स इन द डिप्रेशन. डिप्रेशन में माओ इनहिबिटर यूज करते हैं, आपने हो चुका है ऑलरेडी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स. इफ एनीबॉडी हैज नॉट सीन, गो एंड watch in the recorded lectures. Okay, MAO inhibitors. Then diatrofolate reductase, ये एंजाइम है diatrofolate reductase. उसका सबस्ट्रेट कौन सा है? फोलिक एसिड, डायट्रोफोलिक एसिड. उसका इनहिबिटर देखो अमाइनोप्टेरिन, अमिथोप्टेरिन, मिथोट्रिक्सेट, सल्फोनामाइड्स वगैरह सब. So methotrexate is an anti-cancer drug. So what will it do? It will limit the diatrofolate reductase and convert the conversion of diatropholic acid into tetrahydrofolic acid. ये diatropholic acid बाद में tetrahydrofolic acid में बनता है, and that is used in treatment of leukemia, blood cancer. Okay, acetylcholinesterase enzyme है, उसका सबस्ट्रेट होता है acetylcholine, है ना. उसका इनहिबिटर है फॉर एग्जांपल succinylcholine. उसमें बहुत सारे है, जैसे आपका रिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर, है ना. रिवर्सिबल में आता है आपका नियोस्टिकमिन, पिरियोस्टिकमिन, फाइसोस्टिकमिन, है ना. उसमें एंड्रोपोनियम, है ना, अम्बोनियम, all they are the cholinesterase inhibitor. Succinylcholine is also there. So it is used in the surgery and smooth muscle relaxation in the anesthesia patient. Are you getting or not? समझ रहा है कि नहीं? Are you getting or not? Next enzyme is a dihydroteroid synthase. उसका substitute होता है पावा, पैरामाइड बेंजोइक एसिड. इनहिबिटर होता है सल्फोनामाइड, prevents the bacterial synthesis of folic acid. So सल्फर का मैकेनिज्म ये होता है, it will limit the dihydroteroid synthase. Dihydroteroid synthase ये एंजाइम को अपन बोलते हैं folic acid synthase. Am I audible to you? Okay, dihydroteroid synthase जो होता है उसको अपन बोलते हैं folic acid synthase, and that is inhibited by sulfur drugs. So this folic acid synthesis is inhibited by sulfur drug in the bacteria. Now बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया कैन नॉट यूटिलाइज रेडीमेड फॉलिक एसिड. अपन ह्यूमन जो है ना वो मतलब बहुत ही कमी नहीं होता है. तो ह्यूमंस क्या है कि ह्यूमंस
can utilize the ready-made folic acid. Humans can utilize ready-made folic acid. अगर आपका सल्फोनामाइड ने इनहिबिट भी किया है फॉलिक एसिड फॉर्मेशन, तो भी आपके सेल को कोई दिक्कत नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपको दूसरा ऑप्शन है कि आप रेडीमेड फॉलिक एसिड जो जहाँ से वेजिटेबल से या फिर कहाँ से जाता है वो अपन ले लेंगे. Ready-made folic acid we can utilize. That's why cell will not get damaged. Our cell will not get damaged. But bacteria cannot utilize ready-made folic acid. That's why sulfonamides selectively kills the bacteria by inhibiting the dihydrofolate synthesis. By inhibiting the folic acid synthesis, folic acid synthesis or dihydroterate synthesis. Same thing. And another enzyme होता है विटामिन के epoxidase. विटामिन के epoxidase इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी देखा है. इसका रोल क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन के. विटामिन के क्या है भाई? इसका सबस्ट्रेट है ना. तो विटामिन के is oxidized by vitamin K epoxide and that reaction is coupled with the activation of some blood clotting factors. We have already seen, right? Now warfarin जो था warfarin and dicamerol, warfarin dicamerol, they are nothing but the inhibitor of vitamin K epoxidase, and they inhibit the vitamin K epoxidase and that's why they prevent the activation of blood clotting factors and that's why they act as an anticoagulant. ये भी ऑलरेडी देखा है आपने. ये तो पूरा उसका मैकेनिज्म ऑलरेडी देखा है आपने when we are discussing about the coagulant anticoagulant thrombolysis. Now HMG CoA reductase इसके ऊपर भी हो चुका है. So HMG CoA reductase, so this is again one enzyme. It is a rate limiting enzyme. Rate limiting step is there in the biosynthesis of cholesterol. Cholesterol जो बनता है बॉडी में, है ना. आप बोलते हो सर, है ना, तो वो नए डॉक्टर आ चुके हैं. अभी कौन है नए डॉक्टर? मतलब नई कैटेगरी आ चुके हैं, नए डॉक्टर हो चुके हैं. कौन है? डॉक्टर अक्षय कुमार, है ना. डॉक्टर अक्षय कुमार एक नया डॉक्टर बन गया. कहाँ से? ऑक्सफोर्ड से किया या फिर सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया, आई डोंट नो. एमबीएस करके आए हो, एमबीएस एमडी होके आए. अब डॉक्टर अक्षय कुमार, है ना. उसके बाद में नए डॉक्टर है डॉक्टर अनुष्का शर्मा, है ना. डॉक्टर अनुष्का शर्मा और आज से भी को बहुत सारे डॉक्टर बन चुके हैं नए टेलीविजन डॉक्टर्स. दे यूज्ड टू एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. तो बोलते हैं आपने प्यारे जनों को हेल्दी रखने के लिए सफोला गोल्ड ऑयल यूज कीजिए. इसमें नहीं है क्या? कोलेस्ट्रॉल ना. अक्षय कुमार आते हैं, डॉक्टर अक्षय कुमार, वो बोलते हैं आपको सफोला गोल्ड ऑयल यूज कीजिए, आपके प्यारे जनों को हेल्दी बनाएगा. उनको फोन करके बोलो कि हमारे जो प्यारे जन है ना वो इतनी हेल्दी है कि वो अगर स्कूटी पे बैठेंगे ना तो पूरा टायर ही दस जाता है ना. तो वो हेल्दी है ऑलरेडी एंड देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल इन द वेजिटेबल ऑयल्स. वो बोलते हैं आपको कि ये सफोला ऑयल इसमें नहीं है कोलेस्ट्रॉल. अरे ऑलरेडी नहीं है भाई, ऑलरेडी उसमें नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है ना. बट लेकिन वो बोल के आपको वही ऑयल लेने के लिए प्रेरित किया जाता है. तो मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ाती है ऐसी मार्केटिंग से. आपका मार्केटिंग करना है करो, बोल दो पब्लिक को हमारा सफल ऑयल है आप ले लो, है ना. क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ है, तो कुछ भी मत बोलो, है ना. वेजिटेबल ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होता है नहीं. नाउ देयर इज अ स्टेप्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एचएमजी को है ना. आप देखते हो यार, नहीं यार इतना अच्छा बंदा था, नॉन वेज नहीं करता था, ड्रिंक नहीं करता था, फिर भी उसको हार्ट अटैक आया. क्यों आया? अरे भाई नॉन वेज नहीं खाया मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा. सो कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी. इफ कोलेस्ट्रॉल यू आर टेकिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउटसाइड देन देयर इज नो सिंथेसिस. बट इफ यू आर नॉट टेकिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउटसाइड स्टिल योर बॉडी नीड अ कोलेस्ट्रॉल. बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना ही चाहिए. विदाउट कोलेस्ट्रॉल यू कैन नॉट सर्वाइव, है ना. विदाउट कोलेस्ट्रॉल आप सर्वाइव नहीं कर सकते बॉडी में. क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही आपके सभी हार्मोन्स बनते हैं. कोलेस्ट्रॉल से ही इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना. कोलेस्ट्रॉल ही आपका सेल मेम्ब्रेन का है ना. उसके बाद विटामिन डी का, बाकी एंजाइम्स का, है ना. कोलेस्ट्रॉल ही इंपॉर्टेंट है. विदाउट कोलेस्ट्रॉल यू कैन सर्वाइव. सो कोलेस्ट्रॉल लगता है, अगर आप बाहर से नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर लेगी. नाउ फॉर दैट कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस दिस इज द एंजाइम एचएमजी CoA reductase, hydroxymethyl butyryl CoA reductase. This is the rate limiting step. That is conversion of hydroxymethyl butyryl to the so this HMG CoA is a substrate. Hydroxymethyl butyryl CoA coenzyme that is substrate. Now it is inhibited by few hypolipidemic drugs. For example, statins, lovastatin, parostatin, atorvastatin. So ये ड्रग क्या करते हैं? Inhibit the cholesterol synthesis. Are you getting or not? समझ रहा है कि नहीं? Next is nothing but the enzyme, some enzyme and their allosteric inhibitors. तो कुछ enzymes और उनके allosteric inhibitor. Hexokinase नाम का enzyme है, glucokinase X1. So it is used in the, it is important in the glycolysis. Inhibitor कौन है इसका? Glucose 6-phosphate. It is the allosteric inhibitor. Then phosphofructokinase जो enzyme है glycolysis में होता है. So
So ATP is a allosteric inhibitor and allosteric activator is AMP and ADP. Isocitrate dehydrogenase जो Krebs cycle में आता है, तो allosteric inhibitor होता है ATP and this ADP and NAD is the activator. Pyruvate dehydrogenase gluconeogenesis में ये enzyme लगता है आपको. So pyruvate carboxylase is enzyme required in the gluconeogenesis and it is activated by acetyl-CoA. They are the allosteric activator. Fructose 1,6 bisphosphatase तो ये भी glycogenesis के लिए लगता है, gluconeogenesis के लिए. AMP is the inhibitor, allosteric inhibitor. Carbamyl phosphate synthase 1. So ये तो अपने recently देखा है. It is a rate limiting step in the synthesis of urea. So N-acetylglutamate is an activator, allosteric activator. Am I audible to you? Tryptophan oxygenase. इसमें ये tryptophan क्या activator होता है. Diagnostic marker used for the elevation of acute myocardial infarction. तो अगर acute myocardial infarction हो गया आपको तो उसमें कौन से एंजाइम बढ़ जाते हैं, है ना. तो अपने देखा है मायोग्लोबिन, कार्डियक ट्रोपोनिन वगैरह वगैरह. कार्डियक ट्रोपोनिन क्या है, अर्ली मार्कर एंड कार्डियक स्पेसिफिक, अर्ली मार्कर एंड कार्डियक. और बाद में क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज भी है. बस ये भी दिया है उन्होंने यहाँ पे, है ना. टाइम ऑफ इलेवेशन एंड टाइम पैटर्न टू द नॉर्मल लेवल. बस ये मैंने लिया नहीं था क्योंकि इसका जरूरत नहीं है आपको, तो मैंने वो टेबल उतना ही लिया, ये दोनों नहीं था, बस इतना है. क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर. सो मायोग्लोबिन अर्ली मार्कर बट नॉट कार्डियक स्पेसिफिक, कार्डियक ट्रोपोनिन अर्ली मार्कर एंड कार्डियक स्पेसिफिक, कार्डियक ट्रोपोनिन टी और 2 बोलते हैं उसको. सो अगेन नॉन स्पेसिफिक, इट इज कार्डियक स्पेसिफिक बट also elevated in the other condition. Creatinine phosphokinase cardiac specific early marker, lactate dehydrogenase cardiac specific but late marker, aspartate transaminase not cardiac specific. Are you getting or not? समझ रहा है कि नहीं? Again you can see here or increase in the plasma level of enzymes in the diagnosis of disease. तो है ना, digestive enzyme जो है amylase lipase किस में increase होता है, amylase lipase they are increasing the pancreatitis, है ना. pancreatitis में pancreas का inflammation हो गया, acute pancreatitis. then mumps जो होता है acute parotitis. mumps क्या होता है मालूम है आपको, जो बच्चों में जो गाल में दर्द होता है ना, गाल फूगी माटी में तलांतर गाल फूगी इधर आली ना अत्ता सब चालू हुई. नाउ इट इज अ एपिडेमिक ऑफ दिस mumps. बच्चों में होता है ये, उनके, है ना, उसके गाल जो है ना बड़े बड़े होते हैं. इट इज इन्फेक्शन ऑफ मम्स. एक्यूट पैरोटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट, इसमें भी ये बढ़ जाता है, अमाइलेज. सीवियर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, है ना, उसमें लाइपेज भी पैंक्रियाटिटिस में बढ़ जाता है एंड कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रिया में भी बढ़ जाता है. ट्रांसअमाइनेज जो होता है एलिनिन ट्रांसअमाइनेज, है ना, ये अपने देखा है ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, है ना. एलिनिन ट्रांसअमाइनेज बोलते हैं ALT, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज बोलते हैं GPT एंड एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज AST, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलेट ट्रांसअमाइनेज ये GOT. तो ये GPT ये GOT, है ना, ये GPT ये GOT, ये दो एंजाइम जो है ये GPT ये GOT. these two enzymes they are increased in case of liver disease. liver disease क्यों होता है, acute hepatitis हो सकता है आपको, jaundice हो सकता है, liver cirrhosis हो सकता है ना, मायोकार्डियल इंफेक्शन, लीवर डिसीज, लीवर कैंसर, इसमें ये इंक्रीज हो जाता है. फॉस्फेटेज में 2 टाइप होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड एसिड फॉस्फेटेज. तो दे आर इंक्रीज इन द बोन डिसीज, लीवर डिसीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये सब. ऑलरेडी ये चार्ट बायोकेमिस्ट्री ऑफ सत्यनारायण में गया है, लेकिन आप उसके ऊपर गौर नहीं करते और उससे से ही क्वेश्चन आ जाता है. एंजाइम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो ये अल्डोलेज, एसोसिएटेड हाइड्रोजन, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कब बढ़ता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. अल्डोलेज बढ़ता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लीवर डिसीज, मायोकार्डियल इंफेक्शन, माइस्थेनिया ग्रेविस, ल्यूकेमिया, है ना. आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजनेज कब बढ़ता है, लीवर डिसीज बढ़ता है. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कब बढ़ता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन. देन एक्यूट हेपेटाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ल्यूकेमिया एंड पर्निशियस एनीमिया. नेक्स्ट इज अ मिसलेनियस एंजाइम, क्रेटिनिन काइनेज कब बढ़ता है, मसल डिसीज में, मायोकार्डियल इंफेक्शन. क्रेटिनिन काइनेज कब बढ़ता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन, मसल डिसीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. फॉस्फोकाइनेज कब बढ़ता है, हाइपोथायराइडिज्म, अल्कोहलिज्म में.
कोलेस्ट्रेस कब बढ़ता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। पायोडेस न्यूक्लियोटाइडेज ये सब ऑलरेडी लिया। गामा ग्लूटामिल ट्रांसपोर्टेज कब बढ़ता है? अल्कोहलिज्म में, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ये different enzymes, increased level of these enzymes, they are the marker for particular disease। यहाँ पे देखो है ना, हेपेटिक डिसीज में मायोकार्डियल इन्फेक्शन का तो अपने देखा है। सो हेपेटिक डिसीज में कौन है? अलानिन ट्रांसअमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपोर्टेज एंड पायोडेस न्यूक्लियोटाइड। तो एएलटी कब इंक्रीज होगा? इन केस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज कब इंक्रीज होगा? लिवर डिसीज में, and also increase in the obstructive jaundice, gallstone, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स हो गए तो इंक्रीज होता है। गामा ग्लूटामिल ट्रांसपोर्टेज, इट इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ अल्कोहल लिवर डिसीज। पायोडेस न्यूक्लियोटाइडेज इंक्रीज इन केस ऑफ हेपेटिक कोलेस्टाइटिस, है ना। मसल डिसीज में क्रेटिनिन काइनेज इंक्रीज होता है। काइनेज इज इंक्रीज इन केस ऑफ मसल डिसीज। aldolase is increased in case of muscle disease, but it is an early marker. Aldolase is an early marker for muscle disease. Aspartate transaminase significantly increase in the muscle disease, but not specific. इसमें अल्कालाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन द रिकेट्स एंड पैकेट्स ऑलरेडी हो चुका है। पैंक्रेटिक डिजीज में अमाइलेज लाइपिड बढ़ जाएगा। प्रोस्टेट कैंसर में एसिड फॉस्फेटेज एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये बढ़ जाएगा। कोएंजाइम्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, इसके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका था, तो ये ऑलरेडी मैंने लिया भी है विटामिन चैप्टर में, बट स्टिल ये एंजाइम है इसलिए एंजाइम चैप्टर में भी आपको आ जाए। सो डिफरेंट कोएंजाइम्स व्हिच आर बेस्ड अपॉन द विटामिन्स। विटामिन के कोएंजाइम किसके लिए लगते हैं? कोएंजाइम, कोएंजाइम इज नथिंग बट द इट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम which is required for the activation, which is required for the catalysis, supporting gamma। तो कोएंजाइम देखो, कोएंजाइम है थायमिन का, थायमिन पायरोफॉस्फेट, थायमिन पायरोफॉस्फेट इज नोन एज अ टीपीपी। इट इज derived from थायमिन विटामिन एंड इन्वॉल्व इन द ग्रुप ट्रांसफर। कौन सा ग्रुप ट्रांसफर? एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप ट्रांसफर। ये एंजाइम किसके लिए लगता है? सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। Thymine pyrophosphate required for transcriptase enzyme as a cofactor. Flavin mononucleotide FMN. So there is a cofactor derived from riboflavin and involving the hydrogen and electron transport required for the L amino acid oxidase. Flavin adenine dinucleotide जो होता है FAD, again riboflavin का enzyme होता है, ये coenzyme based upon the riboflavin और it is derived from the riboflavin। रिक्वायर्ड है ये डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज के लिए। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी जो होता है, तो विटामिन बी3 जो होता है आपका नियासिन से मिलता है। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसके ऊपर क्वेश्चन लास्ट ईयर ला चुका है ना। एनएडीपी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ये फर्स्ट एंजाइम होता है ग्लाइकोलाइसिस में। लिपोइक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द, लिपोइक एसिड क्या होता है? इट इज सल्फर कंटेनिंग लिपिड, इज सल्फर कंटेनिंग फैटी एसिड। लिपोइक एसिड क्या होता है? सल्फर कंटेनिंग फैटी एसिड होता है। लिपोइक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। पायरिडोक्सिल फॉस्फेट, विटामिन बी6 जो होता है पायरिडोक्सिल, इसका ये कोएंजाइम है। इट इज derived from the vitamin B6 required, it will transfer the amino group or keto group, required for the alanine transaminase as a cofactor। तो alanine transaminase जो अमीनो एसिड, alanine transaminase जो एंजाइम है उसके लिए ये कोफैक्टर लगता है। कोएंजाइम क्यू, coenzyme A, it is derived from the pantothenic acid and it will transfer the acyl group. So it is a cofactor for thiokinase enzyme। Tetrahydrofolate या PH4 folic acid से बनता है। Folic acid is a, it is a precursor for tetrahydrofolate। Now it is in only the one carbon atom transfer, like formyl methyl, required for the formyl transferase enzyme। Biostin से बनता है biostin or involving the transfer of carbon dioxide, and this is a cofactor for pyruvate carboxylase। इसे methyl cobalamine होता है, deoxyadenosine cobalamine होता है। So they are derived from the cobalamine and they involve in the methyl isomerization reaction and required for the this enzyme malonyl और methyl malonyl CoA mutase, ये एंजाइम के लिए कोफैक्टर लगता है। So details ऑलरेडी अपन ने देखा है उसका एंजाइम विटामिन चैप्टर में। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहा है आपको? नहीं
ये चार्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी आ चुका है। विटामिन में आपने देखा है दोज हु वर प्रेजेंट इन द विटामिन, एक सिंगल चैप्टर विटामिन का कोई 6-7 सेशन लेता है, मैंने लिया है, याद रखना है। एग्जांपल्स ऑफ सम मेटल एंजाइम्स, मेटल एंजाइम्स कितने हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल एंजाइम। तो मेटल देखो, मेटल कॉपर किसे ले लगता है, एंजाइम सुपर ऑक्साइड, डायमेटेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, देन लाइसिल ऑक्सीडेज, ये एंजाइम के लिए कॉपर लगता है। Okay, all these enzymes are the complex known as a metal web. Calcium is required for the lipase and lecithinase. Calcium is found in the this enzyme, lipase and lecithinase, as a metal enzyme. Iron is present in the catalase, xanthine oxidase, peroxidase, cytochrome oxidase. Manganese किसमें होता है, hexokinase, enolase, phosphoglucomatase and glucosyl transferase. Magnesium और किसमें होता है, hexokinase, enolase, glucosyl phosphatase, phosphokinase. मॉलिब्डेनम किसमें होता है, xanthine ऑक्सीडेज में होता है। जिंक किसमें होता है, जिंक इज प्रेजेंट इन कार्बन का नाइट्रेज अल्कोहल डिहाइड्रोजन कार्बोक्सिलेज अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजन। These are the examples of metallozyme. So metals which are tightly bound in the enzyme, and metals they are a part of coenzyme. For example उसका। Now again therapeutic use of your एंजाइम्स, थेरेपेटिक यूज क्या है एंजाइम्स का, उसके ऊपर ये दिखा है, ठीक है। नेम ऑफ एंजाइम, अवेलेबिलिटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इंडिकेशन, ठीक है। तो देखो एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड सिस्टेमिकली, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज, दे आर नथिंग बट द टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। सो व्हाट विल दे डू, देयर स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अवेलेबल है ना, उनका ये डोज भी दिया है, यूरोकाइनेज का डोज भी दिया है ना। 7,50,000 इंटरनेशनल यूनिट टू 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट, इसका डोज होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का। यूरोकाइनेज का होता है 50,000 to 5 lakh इंटरनेशनल यूनिट डोज होता है उसका। Now all these two enzymes they are used in the myocardial infarction. अगर आपको हार्ट अटैक आ गया, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटलाइज करते हैं और ये पहला इंजेक्शन देता है वो डॉक्टर, कौन सा, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज। What they do, they increases the, they activate the plasmin, plasmin को एक्टिवेट करेगा, तो प्लाज्मिन है ना, प्लाज्मिन को एक्टिवेट करता है, तो प्लाज्मिन क्या है, it will break down the fibrin clots, they are thrombolytic, आपने ऑलरेडी देखा है। So they are used in the acute myocardial infarction, acute thrombosis, thrombosis of artery, deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Am I audible to you? Audible आएगा। Yellow asparagine is yellow asparagine is used in the different leukemia, cancer, acute leukemia, malignant lymphomas, इसमें यूज करते हैं। क्या है ये क्या करता है, ये जो एंजाइम होता है सर्टेन ट्यूमर्स, जैसे माया ग्रोथ, जो पर्टिकुलरली ल्यूकेमियाज होता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, उसमें क्या है, दिस ट्यूमर्स रिक्वायर द येल एस्परजिन जीन। येल एस्परजिन क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है, येल एस्परजिन फॉर द ग्रोथ। येल एस्परजिनेज क्या करता है, इट हाइड्रो, येल एस्परजिनेज विल हाइड्रोलाइज द एस्परजिन and therefore growth of cell tumor is suppressed. That's why L-asparagine is used in the cancer. Next होता है digestive enzyme amylase, protease, lipases. ये क्या है, available in the tablet and syrup, required for the therapy of pancreatic insufficiency. तो liver fibrosis, chronic pancreatitis, following the pancreectomy, pancreas remove किया आपको, या फिर pancreas का infection हो गया, फिर fibrosis हो गया, तो उसमें digestion नहीं हो रहा, इसलिए ये enzyme, ये enzyme कहाँ पे आते हैं, these are the enzymes secreted by pancreas only. So that's why if pancreas is having infection, pancreas is removed, fibrosis is there. That's why these enzymes are supplied. Now alpha chymotrypsin, the mucolytic and proteolytic enzyme, alpha chymotrypsin, used in the adjuvant therapy of management of inflammatory edema, post-surgical infection and dental procedure. सेरेशोपेप्टिडेज, ये क्या है, सेरेशोपेप्टिडेज का तो टैबलेट भी मिलता है, सेरेशोपेप्टिडेज 5 mg टैबलेट मिलता है, 5 mg 10 mg। सो इट इज अ फाइब्रोलाइटिक, तो फाइब्रोलाइटिक हाई ब्राडिकाइनिन decomposing activity and also potent casinolytic activity। सेरेशोपेप्टिडेज जब इन्फ्लेमेशन होता है ना आपको, पेन इन्फ्लेमेशन, तब आपको डाइक्लोफेनाक और सेरेशोपेप्टिडेज का कॉम्बिनेशन का टैबलेट देते हैं, डाइक्लोफेनाक प्लस सेरेशोपेप्टिडेज, और डाइक्लोफेनाक, एस्क्लोफेनाक, पैरासिटामोल, सेरेशोपेप्टिडेज,
ये combination से क्यों? It increases the pharmacolytic activity and high bradykinin decomposing property, effective in the adjuvant in the inflammatory and traumatic injury after operation, subconjunctival bleeding. Enzyme used in the locally तो hyaluronidase, ठीक है, ऐश्वर्या राय, नए और एक नया डॉक्टर है, डॉक्टर ऐश्वर्या राय, डॉक्टर ऐश्वर्या राय, है ना, कहाँ से किया है क्या मालूम एमबीबीएस, डॉक्टर ऐश्वर्या राय, वो बोलते हैं लॉरियल, लॉरियल पेरिस का सीरम, इसमें क्या है, हाइलोयूरिनेज, हाइलोरेड, है ना, हाइलो हाइलोरोनिडेज, हाइलोरोनिडेज, इसमें हाइलोरोनिक एसिड, तो वही हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है, available. It brings about the deep polymerization of ground substance and help in the absorption of fluid. Promotes the diffusion of fluids given by subcutaneously. Intra-articular injection in the joints to alleviate the osteoarthritis. ये सब इसकी common uses है, therapeutic use of enzyme. Now again, coenzymes related to B complex ये already हो चुका है, adenosine triphosphate ATP बोलते हैं अपन, सिस्टीडीन डाइफॉस्फेट सीडीपी बोलते हैं, यूरिडीन डाइफॉस्फेट यूडीपी बोलते हैं, यस एडेनोसिल मिथाइलिन सैम बोलते हैं, फॉस्फोडाइएडेनोसिन फॉस्फोसल्फोनेट पीएस बोलते हैं उसको, उसका बायोकेमिकल ले लो, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का टोनेट द फॉस्फेट एडेनोसिन एंड डाइएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मोइटीज, साइड सिस्टीडीन डाइफॉस्फेट का रोल क्या है, required in the phospholipid synthesis as a carrier for choline and ethanol. Uridyl diphosphate का रोल होता है carrier for monosaccharide required for the glycogen synthesis. Yes, adenosine methionine SAM जो होता है उसका रोल होता है donate the methyl group in the biosynthetic reaction. और phosphodiadenosine phosphosulfate उसका रोल होता है मतलब PAPS उसका रोल होता है donate the sulfur, नाम में लिखा है phosphosulfate. So these are the different. Now selected list of enzymes and their application ये already हो चुका है, एक बार देखो additional कौन सा है, alone antitrypsin to treat the emphysema, ना बाकी तो हो चुका है, ना luciferase to treat the bacterial contamination in the food, बाकी ये already हो चुका है, ले लिया मैंने. So this was the today's session. In the afternoon session we will see the nucleotides.